Okay, so we are starting now. Prisha, it's your first lecture, so just simple rule: whatever doubts are coming into your mind, just frankly ask. Okay? Okay, Don't be sir. worried about लोग क्या कहेंगे, sir क्या कहेंगे. Whatever doubts you are having, you can ask it frankly. Okay? So Yes, sir. basically, we have done 2 lectures in fact, and you must have gone through ना जो notes मैंने भेजा था. Yes, sir. Okay, ठीक है. So everything was clear, or you are having some doubts? I have some doubts, but it's fine. I'll ask you after the Okay. class. Okay, not a problem. So basically, you know the basic concept of oxidation state and Yeah. okay, ठीक है. So last class में for now everyone, last class में what we have done ना, we have discussed the concept of oxidation, reduction, redox reaction, oxidizing agent, reducing agent, है ना? The one which is getting oxidized will be reducing others, and that's why it will be called reducing agent. The one which is getting reduced will be oxidizing others, so that will be called oxidizing agent. So everything was being done in terms of oxidation state itself, and that's why oxidation state or oxidation number has become a mathematical tool for us. And you'll see that in future that we'll be using this tool a lot in this chapter. And in fact, after that also, when we'll be discussing the electrochemistry type of chapter, it is going to be an important part of our life. And that's why ये concept में कहीं भी compromise नहीं करना है. It is going to affect 2-3 chapters together. ठीक है? So that's one part. Now, today what we are going to do, we'll be trying to balance the reaction. Like if you see this reaction, ये रिएक्शन में अगर ऐसे देख के बोलू ना, whatever we do generally ना, if I give you N2 plus H2 giving NS3 और KClO3 giving KCl plus O2, ऐसा कोई रिएक्शन में दे दूं ना, तो तुम लेफ्ट देखते हो, राइट देखते हो, you can balance it directly, है ना? So I'll say कि it is observational method or it is hit and trial method. एक बार ये देखा, कुछ फिक्स किया, फिर राइट साइड में देखा, कुछ फिक्स किया, and then you can balance the reactions, है ना? And you do that for many redox reactions also. So I'll just show you 1 or 2 examples. If I am having a reaction I2 plus Na2S2O3, and that is giving you NaI plus Na2S4O6, can you balance it? ऐसा देख के, कोई मेथड नहीं फॉलो करना है, जस्ट लेफ्ट देखो, राइट देखो, बताओ जरा क्या. What should be the coefficient of each reactant and product? Tell me. So 1, 2, 2, 1. Okay, 1 and then यहाँ 2 किया, तो we have got S4O6 जैसा कुछ दिख रहा है, and we have to put 2 here and then it is balanced, है ना? ये मेथड क्या था? जस्ट लेफ्ट देखा, राइट देखा, आयोडीन बैलेंस करने के लिए राइट में 2 लगा दिया, Na किया सामने, and to balance the sulfur we have put 2 before Na2S2O3, which is called sodium thiosulfate. Is it okay? So this is a redox reaction which you have balanced without following any method. It was just by observation, है ना? But you will be having many reactions, like I told you. If I give you the reaction in which we are having a reaction like KMNO4 plus H2C2O4 plus H2SO4 giving K2SO4 plus MnSO4 plus CO2 plus H2. Now, even if I give you now 5-10 minutes, जो मैं normally देता हूँ कई बार classes में, even if I give you 5-10 minutes, you will not be able to balance it, because the problem with this is also redox reaction. पिछला वाला भी was a redox reaction, but in this case, if you see, oxygen को ही देखो ना, in every reactant and every product, oxygen is present. So how to balance it, है ना? So you are having many variables in just one equation, है ना? पहले का कोफिशिएंट अगर x रखा, दूसरे का y रखा, तीसरे का z रखा, और राइट साइड में if you are following the same thing, it will be very difficult to balance it, and that's why we need appropriate method, we need strategic method by which we can balance all the redox reactions. ठीक है? So again, we need to be smarter that if the reaction ka balancing is very easier by the method of observation itself, so why to follow those steps, है ना? Understanding the point now? If it is easy to balance by observation itself, like I gave you this one, you have balanced it, है ना? So if it is very easy to balance by observation itself, we will not follow any method, है ना? Direct इसको balance करेंगे, and we are doing it at a lot for many redox reactions.
in our life, whatever you have done na chemistry, stoichiometry वगैरह में भी, CH4 plus O2 giving CO2 plus H2O, NaCl plus NaOH plus H2SO4 giving Na2SO4 plus H2O. इसमें से कुछ रिएक्शंस रेडॉक्स थे, कुछ नहीं थे. लाइक एसिड बेस रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शंस, उसको भी बैलेंस करना सीखा. KClO3 गिविंग KCl plus O2, that is also balance redox reaction. Even if I give you NaCl, Na plus Cl2 giving NaCl, that is also a redox reaction. But हम लोग इसको ऐसे ही बैलेंस कर लेते हैं ना. But if I give you a reaction like this one, or we'll be seeing many complicated reactions also. So if I give you these type of reactions, we are required to follow particular set of steps, which will ensure you कि every time I can balance any reaction. ठीक है? तो redox reaction की balancing will be the today's topic, and in that we are going to follow some of the steps by which we can balance the reactions. है ना? तो एक एक करके सारे steps देख लेते हैं. I'll give you साथ में एक दो एग्जांपल्स भी करते जाएंगे, and then we'll see कि whatever reactions I will give you ना, whether you are able to balance them or not. So there are basically, I have divided it into 4 steps. Different books, different faculties will be giving you different number of steps. कुछ तो ऐसा करेंगे ना कि बोलेंगे there is a method called oxidation number method, then there is another method called ion electron method. दोनों मेथड में ज्यादा फर्क नहीं है, आगे पीछे का नाक सामने से छुआ या घुमा के छुआ. So इसमें देखोगे I'll just first allot the electron, then I'll balance the charge. In ion electron method, you first balance the charge and then later on you allot the electron. That's the only difference. And then they'll give you my method. ऐसा बोलेंगे this is my method. वो क्या करेंगे ना, यही 4 स्टेप जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको एक स्टेप में करके दिखा देंगे, and they'll say कि it is my. So there is nothing called my method. I do the same thing, but I know that mentally कि these are the 4 steps which I can do in one step. ठीक है? So I'll just show you कि how to do those things, how to write the reaction, and mentally चारों स्टेप अगर तुम्हारे माइंड में फिट हो गए ना, you can also do that, and you call it my method, है ना? So there is no problem in that, but I'll give you one by one. सारे examples मैं दूंगा. So whenever you will be dealing with the redox reactions ना, you will be facing 2 types of reaction. One reaction in which there is no ion present on the left or the right side. That will call it a molecular reaction because it will not have any ion. But if you are having some ion left or right or both sides, then we'll call it ionic reaction. The difference, basic difference between these 2 types of reactions will be that when you are having an ionic reaction, that means which is involving some ion, it is having a charge. So you should not only balance the atoms, you should balance the charge also. So you'll see that कि पहले 2 स्टेप 3 स्टेप तो सेम आएंगे, कॉमन आएंगे, बट जैसे ही मैं जाऊंगा लास्ट स्टेप में, I'll say that you have to balance the charge also if the reaction is ionic, and that will be an extra part in ionic reactions. So when I'm saying molecular reactions and ionic reactions, what type of reactions we will be getting? In fact, same reaction can be expressed in both the forms. So just see it. So we are starting the balancing of redox reaction. I'm just giving you one method. Not required कि सारा मेथड बार बार सीखते रहो. So you are supposed to balance the reaction. So कोई भी एक मेथड से कर लोगे तो काम हो जाएगा. And this I think कि बच्चों के बीच में मैंने देखा कि this is the easiest method जो बच्चों को फील हो. When I see it कि दोनों मेथड सेम ही है, आगे पीछे कर दिए और कुछ नहीं फर्क है. So I'll just give you this method. So I was talking about some reactions which are molecular reaction. In all these examples, if you see ना, there is no ion involved in any of these reactions. जो पहले 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए है ना, there is no ion directly involved. So left side में every substance is having net 0 charge, right side में every substance is having net 0 charge. But if you see the second category, we are having MnO4 minus, C2O4 2 minus, H plus, Mn2 plus. ऐसा नहीं कि every substance has to be ionic, but even if one substance is ionic, it will be called ionic reaction. ठीक है? So we need to take care of the total charge on the left and the right side also. So similarly, Cr2O7 2 minus, Fe2 plus, H plus, Cr3 plus, Fe3 plus. H2O is not ionic. It is having simply 0 charge, net 0 charge, but still it will be called ionic reaction. Is it okay up to this point? Any doubt? चलो अभी एक एक करके स्टेप में देखते हैं. And I'll carry 2 reactions, one from the molecular reaction, one from the ionic reaction. I'll keep balancing it. I'll keep following the steps with the 2 reactions. मान लो मैंने जैसे if I take this reaction and I'll take this reaction, ठीक है? कोई भी 2 लेकर चलते हैं, and then we'll have many reactions जिसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. So the first step is
you need to identify what are the atoms which are changing its oxidation state when going from left to right. ठीक है. I have started calling it functional atom. जैसा मैंने पहले भी तुमको बोला था, whenever I use, this is not an official term, this is not a technical term, this is term coined by me only. कि इतना बड़ा the atom which is changing its oxidation state on the other side, इतना बार बार बोलने की वजह मैं बहुत आलसी हूँ, मैंने इसको बोलना स्टार्ट किया. It will be called functional atom. ठीक है. So whenever I say functional atom, it means that atom which is changing its oxidation state on the other side of reaction. ठीक है. तो पहला step is will be identifying all the functional atoms, that means those atoms which are changing the oxidation state on the other side, and then we'll assign the oxidation state on both the sides. Like if you see these things, मैं ऐसे तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं अभी. सो इफ यू आइडेंटिफाई के का +1 आएगा, mn का +7 आएगा, o का -2 आएगा. इफ यू सी mn on left side it is in +7 oxidation state, on right side it is +2 oxidation state. That becomes a functional atom. So mn is the functional atom. Similarly if you see carbon का, it is ऑक्सिलेट का कार्बन. अब धीरे धीरे याद भी रखना है, ऑक्सिलेट का कार्बन +3. ठीक है. सो सल्फेट का सल्फर +6, फॉस्फेट का फॉस्फोरस +5, नाइट्रेट का नाइट्रोजन +5. धीरे धीरे इसको बार बार ऐसा बोलते रहोगे ना, तो देयर विल बी टाइम जब तुमको भी ये बिल्कुल ऑब्वियस सा लगेगा. डाइक्रोमेट या क्रोमेट का क्रोमियम +6, मैग्नेट का मैग्नीज +6, पर मैग्नेट का मैग्नीज +7. ठीक है. तो ऐसा इफ यू कीप सेइंग इट ना, तो देयर विल बी टाइम जब तुमको बार बार याद हो जाएगा. तो व्हेनेवर यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी ना, बार बार कैलकुलेट मत करो, पहले याद करने की कोशिश करो. वंस यू आर एबल टू रिकॉल इट ना, तो फिर काम हो गया, फिर वो बैठ के कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. एंड आई हैव गिवन यू इजियर मेथड ऑफ कैलकुलेशन. इतना बैठ के इक्वेशन बनाने से मच बेटर है. देखो ना, ओ -2 लिया तो ये पूरा -8 हो गया. के +1 है तो एक ही के है तो पूरा +1 हो गया. डेफिनेटली एम एन को कितना देना पड़ेगा, सो दैट नेट विल बी 0. इट विल बी +7. So by this method we can do it fast, है ना. So that was one point. So CO2 को if you see na, this is on the other side, C in the CO2 is +4 oxidation state. So carbon has become the second functional atom. Now everything else is not changing its oxidation state. Every H is in +1, every O is in -2, sulfur is in +6 oxidation state, K is in +1 oxidation state. So they are not changing the oxidation state on the other side of reaction. If you see this reaction, Cr is +6, Cr is +3, Fe is +2 here, Fe is +3 here, है ना. So we have identified what are the functional atom and what are the substances which are having functional atoms. ठीक है. एक बार इसको आइडेंटिफाई कर लिया, this is our first. Is it okay? Anyone having any doubt? Everyone clear ना? सोनिया, राघव. हाँ सर यू सेड नाइट्रोजन का वो कब +5 होता है? नाइट्रेट में NO3 अच्छा. -. हाँ. नाइट्रेट का नाइट्रोजन +5. आई हैव गिवन यू द होल लिस्ट ना. तो धीरे धीरे उसको देखने का है. एटलीस्ट जो आयंस बनते हैं ना, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली तुम्हारे सामने आते हैं, उनको बार बार ऑब्जर्वेशन में रखने का. आई एम नॉट सेइंग कि डे 1 पे तुमको पूरा याद हो जाएगा, बट व्हेनेवर यू हैव फेस्ड दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस ना, पहले याद करो, फिर अगर नहीं हुआ तो कैलकुलेट, एंड देन कैलकुलेट करने के बाद फिर याद करो कि अच्छा नाइट्रेट का नेक्स्ट टाइम से इफ आई गेट नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रेट ना, आई विल से सीधा +5. ओके. ठीक है. तो ये अप्रोच रहेगा ना, तो देर विल बी टाइम जब तुम खुद, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑक्सिलेट का कार्बन +3, तो ये बोलना स्टार्ट कर दोगे तुम वंस यू हैव डन दैट. लेकिन ये इंटेंशनली अगर नहीं करोगे तो फिर कभी याद नहीं. ठीक है. तो फिर इसको इंटेंशनली थोड़ा एफर्ट डाल के वी हैव टू डू इट सो दैट वी कैन बी फास्टर इन द एग्जाम, है ना. हर्ष. हाँ. सर आपने जो अभी लिस्ट मेंशन किया वो होमवर्क का क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हो आप? विच लिस्ट? हाँ वो मतलब list हाँ, of- जो 188 मैंने दिए थे हाँ ना हाँ हाँ कैलकुलेशन वाले, उसमें इफ यू ऑब्जर्व ना, जैसे फॉस्फेट मैंने स्टार्ट में दे दिया H3PO4. बाद में जब मैं कैल्शियम फॉस्फेट लिख रहा हूँ ना, तुमको याद हो जाना चाहिए फॉस्फेट का फॉस्फोरस वाज +5. सो वी डोंट हैव टू डू द कैलकुलेशन. इफ आई गिव यू NaNO3 में नाइट्रोजन कैलकुलेट करो, इफ यू हैव कैलकुलेटेड इट +5 ना, बाद में जब मैंने अमोनियम नाइट्रेट दिया ना, तो सेपरेट दो जायंस, NH4+ का नाइट्रोजन विल बी -3, क्योंकि अमोनियम आयन का नाइट्रोजन इज -3 एंड नाइट्रेट का नाइट्रोजन इज +5. सो नाइट्रेट हो सोडियम का हो, कैल्शियम का हो, एल्युमिनियम का हो, किसी का भी हो, नाइट्रेट का नाइट्रोजन इज +5. तो ये क्या होता है ना, ये एफर्ट है जो तुमको अलग से डालना पड़ेगा सो दैट यू कैन सेव योर टाइम इन द एग्जाम, है ना.
लेकिन ये अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो फिर कभी याद नहीं होगा, फिर हर बार कैलकुलेशन कर। सो यू विल सी दैट कि मैं सीधा लिख दूंगा। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आई हैव इंटेंशनली पुट दैट एफर्ट कि हाँ, जब जब मेरे को MnO4 माइनस आएगा मैं बोलूंगा Mn इज +7, ऑक्सिलेट का कार्बन विल बी +3, एंड प्रैक्टिस के थ्रू भी आएगा, बट इंटेंशनली थोड़ा याद रखने से। ठीक है, ओके, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। एनी डाउट एनीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नहीं है? चलो अभी दूसरा स्टेप क्या है, बहुत सी सिंपल सी चीज है। We have already identified which one is getting oxidized. Oxidation का मतलब था oxidation state या oxidation number का बढ़ जाना, है ना? If the oxidation state is increasing, then we say that oxidation has happened. Now, oxidation किसका हो रहा है in first question और first reaction? Tell me, किसका oxidation? H2C2O4 का कार्बन, हाँ जी, H2C2O4 का कार्बन। हाँ, तो we'll say H2C2O4 is getting oxidized to form CO2. Is it okay? Language is clear? And reduction किसका हो रहा है? KMNO4। KMNO4 का। और वो कहाँ जा रहा है? K2SO4. KMNO4 में किसका रिडक्शन हो रहा है? अच्छा, MN MN का। MN का। और वो MnSO4. कहाँ जा रहा है? MnSO4। तो सेकेंड स्टेप इज we'll be writing the two half reactions, oxidation half reaction and reduction half reaction, involving only those substances which are having functional reactions. ठीक है? So like I'll give you an example. If I am having, ये दोनों एग्जांपल कैरी करके चलेंगे हम लोग हर बार। So if I am having this one, क्या किया मैंने? पहले तो मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखूंगा। So oxidation half reaction will include carbon was going from +3 to +4. So I'll write H2C2O4 giving CO2. Is it okay? Now with that, I can also balance the carbon atom of this half reaction simultaneously. Like if I have to balance the carbon, क्या करना पड़ेगा? 2. 2 यहाँ रखना होगा या हाफ यहाँ रख सकते हैं, whatever you want, है ना? So that reaction doesn't hesitate in having fractional coefficient because we can work in terms of moles, not atom or molecule, है ना? फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल या एटम नहीं हो सकते, बट मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स तो फ्रैक्शनल हो सकते हैं। हाफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं। सो यू कैन पुट फ्रैक्शनल कोफिशिएंट आल्सो, दैट इज आल्सो अलाउड। सो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस स्टेप, वी आर writing the half reactions, oxidation half reaction and reduction half reaction, and we are balancing the functional atoms only. I have not balanced H, I have not balanced O, and if in fact I have not taken care of the H and O और कहाँ जा, I've just taken care that carbon was getting oxidized and it is going in the form of CO2. So carbon of H2C2O4 and carbon of CO2 has been balanced by putting a coefficient of 2 in front of CO2. Is it okay? Now the second step is, anyone having any doubt, पूछ लेना, क्योंकि ये बार बार आने वाला है. So we'll be dealing with many redox reactions in future in this chapter and one more chapter which is electrochemistry. तो बार बार आएगा, तो इसमें don't be hesitant in asking your doubts. So दूसरा यहाँ क्या लिखूं बताओ? Reduction half reaction में what should we write? KMNO4 to MnSO4। Okay, so KMNO4 का Mn was going from +7 to +2. This is going from +7 to +2, and that's why we'll be writing these two substances. Should I put any coefficient to balance the functional atom in this one, in this half reaction? What is the functional atom? That is Mn. और Mn देखो ना, लेफ्ट राइट दोनों में 1 1 है ना, दैट्स व्हाई इट इज ऑलरेडी बैलेंस, सो वी डोंट हैव टू गो। तो जरूरी नहीं कि हर बार ये स्टेप फॉलो करना ही होगा, हो सकता है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड। इज इट ओके? विल टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल, दोनों कैरी करेंगे हम लोग। सो इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड एग्जांपल, इफ यू सी दिस वन, so now in this case if you see the same step says write the half reactions, so I'll write OHR। बताओ OHR में क्या लिख, currently support के लिए I'll write the oxidation. 2O7 Fe2+2 Okay, we need to write oxidation half reaction, so we need to see किसमें oxidation state is increasing, है ना? And that's why I'll write +3 here, and then if you see +2 से +3 जाना is increase in oxidation state, and that will be called oxidation half reaction, and that's why we'll write Fe2 plus giving Fe3 plus. Should I put any coefficient to balance the functional atom? No, Fe is already balanced, है ना?
But if I write reduction half reaction, what is the reduction half reaction? Cr2O7 2 minus to 2 Cr3 plus. Cr2O7 2 minus giving Cr3 plus, because Cr is going from +6 to +3, and that's why oxidation number is decreasing, so reduction is happening, and that's why we have written that. Any coefficient which is required to write here? Yes, sir. 2 on the Cr3 plus side. On Cr3 plus side, we can put 2, or we can write half here on the left side, right? Whatever we want to. Okay? Now, we have written the half reactions, and we have balanced the functional atoms by putting or assigning appropriate coefficient. That is step 2. Third step is the most important step. ऐसे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते, but third में गड़बड़ी का चांस ज्यादा होता है. The third step is, now in these half reactions, we need to see what is the total change in oxidation number of the functional atoms, and whatever number is coming, same number will be put with electron. That means same number of electrons should be assigned on the right side of OHR and on the left side of RHR. OHR means oxidation half reaction, RHR means reduction half reaction. So what we are going to do, if I take the same reaction again, so if I take, I'll just write the reaction first so that we can have the reference. So if I take the same reaction here, इसके लिए we have already written the OHR and RHR, और ये स्टेप ध्यान से देखोगे, any doubt just ask me. So if I write OHR, already we have written, पिछला स्टेप कर चुके हम लोग, so we will write OHR में H2C2O4 is giving you CO2, and we have already put a coefficient of 2. Now, if you see this step, what I have told you, that you just see the functional atom are balanced, and what is the total change in oxidation state of the functional atoms. So, every carbon is going from +3 to +4, है ना? What is the change per carbon? 1, One का change per carbon. And how many carbon atoms we have? 2. 2 carbon atoms. That's why we are saying per carbon there is change of 1. So there are 2 carbon atoms. So total change will be 2. In OHR, we need to write it on the right side because oxidation में electron gets released. Is it okay? RHR में क्या करना होगा? RHR में we will write same. We have the reaction. So this was having KMnO4, and this was giving you MnSO4. Mn was already balanced. Now, if I start allotting the oxidation state, if you see it, this was going from +7 to +2. What is the change in oxidation state per Mn? -5. 5. 5. Minus 5. And there is just one Mn. है ना? That's why we'll be putting 5 electrons. Is it okay? लेकिन एक स्टेप और है इसमें. If you remember ना, मैंने पहले भी बोला था redox reaction के टाइम पे, while adding the half reactions, यहाँ पे देखो, while adding the half reactions, we need to ensure that the electron released in OHR must be exactly same as the electron accepted or gained or consumed in the RHR, है ना? But if you see this reaction जो हम लोगों ने अभी किया है, in this reaction, OHR is having 2 electrons, RHR is having 5 electrons. What to do? So we need to multiply each half reaction with an appropriate number so that the electrons are equalized. Is it okay? So बताओ जरा कितने कितने से multiply करूं so that we can get the Into 5 exact. into 2. Into 5 into 2. Okay, very good. So into 5 किया तो इधर 10 हो गया, और into 2 किया तो इधर 10 हो गया. We can also do into 5/2 पहले में, दूसरे में कुछ ना करो. That is also possible, है ना? Just we need to equate the electron by multiplying the half reaction. I'm not multiplying 5 with the electron itself. I have to multiply the complete half reaction by 5 and the complete half reaction by 2. So if I add it, now इसके बाद क्या करना है? Add कर देना है. तो add किया तो redox reaction जो आ रहा है ना, that is, we'll be writing 5 H2C2O4 plus 2 KMnO4. Anything on the left side? Anything else on the left side? No, sir. नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो कैंसिल आउट होगा. हाँ.
That's why we'll be writing here. इसके बाद we'll write 10 CO2 plus again electron will get cancelled. So we are getting 2 MnSO4. And while writing that, अभी से practice करके रखेंगे, which will be very useful in the later section and in electrochemistry also. We say that कि with this balancing there were 10 electrons. ठीक है? So we'll write that everywhere whenever we are balancing the reaction, क्योंकि ये बाद में useful होने वाला है. Is it okay? Now इतना कर लेने के बाद चलो दूसरा आयन वाला भी कर देता हूँ सिमिलर वे में. So if I give you another example, इस स्टेप में भी if I have to write OHR and RHR, जो कर लिया उसको repeat, I'll repeat it simply. So I'll write it. OHR was having oxidation was happening with Fe, which was going from +2 to +3. So I'll just write it. So if you see OHR में we were already having Fe2 plus giving Fe3 plus, and Fe was already balanced. And in second step RHR में we were having this giving Cr3 plus, but यहाँ हम लोगों ने 2 रखा था to balance the chromium which was the functional element. Now tell me how many electrons should I write on the right side of OHR? 1 electron. 1 electron, because change in oxidation state, it is going from +2 to +3. 1 का change per Fe, and there is just 1 Fe, and that's why we'll be writing 1 electron, or simply we can write electron. What is the change of oxidation state of Cr per atom in the RHR? Per 3 atom. electrons. 3 का change है +6 से it is going to +3. So change is of 3 per atom, and we are having 2 atoms, so that's why 6 electrons we should write on the left side. Is it okay? This is the critical मुझे step. एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, क्या बोला? Cr was in +6 है ना? Cr in Cr2 was 7, 2 minus is in +6. Cr +3 में it is in +3 है ना? हाँ. What is the change per Cr? 3. 3 का change. And how many Cr we have? 2. 2. So that's why total change will be per Cr change is 3, and we have 2 Cr. So total change has become 6 है ना? Okay. Okay. Now again electrons are not equal, so that's why we need to multiply the half fraction with an appropriate number. And in this case, if I just multiply the first half fraction with 6, I'll be getting equal electrons, huh? Yes, sir. And then we'll add it. So if I'm adding it, I'm getting 6 Fe2 plus Cr2O7 2 minus, and electrons will get cancelled. 6 Fe3 plus 2 Cr3 plus, and it includes, or it involves 6 electrons. Is it okay? Now we are coming to the final step. Final step will have 2 cases. First case, if the reaction is molecular, then we have to follow something else. Now अभी तक बता दो कोई भी doubt है? If you have any doubt, just ask. Anyone having any doubt? Yusha? नहीं सर, कोई डाउट नहीं. नहीं ना? Anyone else having any doubt? Clear है? चलो Hello. last step पे जाते हैं. Last step Sir. will have 2 cases. हाँ जी. हेलो सर, मैंने अपना आंसर भेजा है, एक बार चेक करो. ठीक है, तू क्यों आगे भाग रहा है? क्लास के साथ चलना. हेलो. नहीं सर, ये किया हुआ है. इसलिए मैं इसके कर रहा हूँ, आगे मत भाग. ऑब्जर्व कर, हो सकता है कुछ नया सीख जाए. ठीक और है. अदरवाइज तुम्हारे पास क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर तब तक, है ना. और इस क्वेश्चन में तो चेक करवाने की जरूरत नहीं है, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ, है ना. ठीक है, चलो लास्ट स्टेप पे जाते हैं. हाँ राघव, यू आर सेइंग समथिंग. हाँ सर. So like in this reaction, the plus H plus and वो H2O, so that doesn't happen. Like उसका अभी क्या? तक नहीं आया है, बट वी आर नॉट सेइंग कि आई हैव ऑलरेडी बैलेंस्ड इट, है ना. ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा. आई हैव नॉट बैलेंस्ड इट कंप्लीटली, देयर इज वन मोर स्टेप, है ना. तो फाइनल स्टेप में विल बैलेंस एवरीथिंग. ठीक है. So now that step 4 will have 2 cases. First case is if reaction is molecular, then what to do, and second case will be when reaction is ionic, then what to do. Now if you see, if the reaction is molecular like the first example in which H2C2O4 and KMnO4 is there. Now if you see, उसमें क्या करना है ना, simply देखना है कि H and O के अलावा whatever atoms are there, that should be balanced. And वो कहाँ से करना है? तो जो हम लोगों ने observation सीखा था स्टार्ट में ना, वैसे ही करना है. If you see this reaction,
H and O के अलावा what are the atoms involved? H and O के अलावा एक तो कार्बन था, एक तो Mn था. Those were the functional atoms. Just ensure that कि they are balanced or not. एक बार करने का एक काम, क्योंकि आगे मैं एग्जांपल दूंगा जिसमें धोखा होगा if you don't. Carbon is balanced. 10 इधर भी है, 10 इधर भी है ना. Yes. Mn is balanced. 2 इधर है, 2 इधर भी है. Now tell me, what are the other elements present here other than H and O? पोटेशियम, Potassium, yes. Anything else? Sulfur. Left, right दोनों देखने का है. Anything else? Sulfur. Sulfur is also there, na? So we need to balance potassium and sulfur before balancing H and O. Okay? That's the rule. So we have got the reaction till now is this much plus 2 KMnO4. And that has given you, I'm leaving the space to write other things, 10 CO2 plus 2 MnSO4. And then if you see, we have still not balanced K and S. C and Mn will confirm all the atoms. I have written all the atoms except H and O. So that includes carbon and manganese also, but we have ensured that you balance already. Now to balance the potassium, what should we write on the right side of the reaction? What are the substances which are having potassium on the right side? K2SO4. Only K2SO4 is having potassium, है ना? And that's why if you want to balance the potassium, how many K2SO4 we should write on the right side? 1. 1 ना, एक लिखा देखो, 2 potassium आ गए है ना? Is it okay? Yes. Everyone? Now, potassium is also balanced, carbon balanced, Mn balanced, potassium balanced. Right side में sulfur कितने? 3. 3 ना, 2 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, 3. So for balancing sulfur, what is the source of sulfur on the left side in the reaction? If you see the main reaction, what is there which is bringing sulfur along with it? H2SO4. 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 Now we need to balance 3 sulfur atoms, है ना? So how many H2SO4 we should write here? 3. मैं H2SO4 लिख दे रहा हूँ. Tell me how many H2SO4 we should write here so that sulfur is balanced. 3. 3. Now sulfur is balanced. Is it okay, everyone? Yes, sir. Now, Yes, sir. इतना कर लेने के बाद, now we have not balanced hydrogen and oxygen. For that, hydrogen will always be normally will less be in number. देखो जरा left side में how many hydrogen atoms are there? 16. 10 यहाँ पे दिख रहा है और 6 यहाँ पे, तो 16 hydrogen are there ना? Right side में how many hydrogen atoms are there? 0. 0. And for that, the source is H2O. And H2O, even if it is not written in the reaction, we are allowed to take H2O molecules on the required side. So to balance the hydrogen, I want to add H2O. Now you tell me how many H2O I should add. 8 H2. 8 H2O. 8. और इतना करने के बाद मैजिक हो. वो मैजिक क्या है? ऑक्सीजन एटम विल ऑलरेडी बी बैलेंस्ड. अगर मैजिक नहीं हुआ तो तुमने कुछ मिस्टेक कर दिया. चेक योर प्रीवियस स्टेप्स. अगर मैजिक हो गया तो फिर यू आर राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि बाकी सब तो बैलेंस कर लिया था ना. ना बताओ जरा, ऑक्सीजन अभी कितने दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में? 40. ओके, लेट्स सी. 20 इधर दिखा. ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहा हूँ. देखो जरा इधर, यहाँ पे वी हैव 20, वी हैव 8 एंड वी हैव 12. सो इफ यू ऐड देम, टोटल इज 40. इधर देखते जरा, वी हैव 20, वी हैव 8, we have 4 and we have 8. The total is again 20, 40, है ना? Is it okay? So once you have balanced all the remaining atoms, oxygen will automatically be balanced, and that's a check if we have done right or wrong. ठीक है? Any doubt? चलो next देखते हैं. The second case is when the reaction is ionic in nature. Then we need to take care, already told you that we need to take care of the charge also, and that's why अभी इतना करने के बाद, जो आयनिक वाला हम लोगों ने किया था Cr2O7 2- वाला रिएक्शन, इतना करने के बाद we need to balance the charge. Now we need to be careful.
We need to see the medium. तो क्या है ये जो balanced reaction है, I'll just write it 6162. So the reaction was 6Fe2 plus. What we have done so far is this one giving थोड़ा space दे देता हूँ so that we can add the other things. This much, and this time we have 6Fe3 plus 2Cr3 plus. This was the case. Now, if you see, what is the total charge on left side and right side? And we have to see it with the sign. Plus minus है तो plus minus लेने का है. What is the net charge on the left side? +10. Okay, ये देखो +12 लेकर आ रहा है और ये -2 लेकर आ रहा है, and that's why it is +10. What is the charge on the right side? +24. Okay, this is 18 and this is bringing 6, so that's why 24. Now there is a gap of 14, है ना? Now, in order to fulfill that requirement, na, one is at +10 and another is at +24. So the gap is of 14. 14 का gap है ना? तो to balance the charge, we need to somehow या तो मैं left side में 14 add कर दूं या फिर right side में 14 subtract कर दूं. That will depend on the medium of the reaction, and medium of the reaction most of the time will be visible in the reaction itself. Like if you see, इसका जो main reaction है इसमें if you see, I have already written H plus. So there are Acidic. three ways of telling you the medium of reaction. If you see in this reaction, reaction itself will include H plus or OH plus. Okay, that is the first way. Second way, it will be written in bracket. Right side में पूरा reaction लिख के they'll write in bracket acidic medium या basic medium. That's second way. Third way, they'll be mentioning the pH at 25 degrees. So if that pH mentioned is more than 7, we'll take basic medium. If pH is mentioned is less than 7, we'll take acidic medium. चौथा तरीका, if they have not written anything like H plus or OH minus and they have not mentioned acidic or basic medium and they have not mentioned pH, that means by default, if nothing is mentioned to indicate the medium, we take the acidic medium as the default medium. Is it okay? By default, we'll be considering acidic. So now we have H plus. Now H plus jidhar bhi aayega na, it will increase the charge because it is having positive charge. Hai na? So if you want to add H plus, I have to add that on the side which is deficient in charge or which is having less amount of charge. And that's why 14H plus will balance the charge. Hai na? Is it okay? Basic में करना रहता तो क्या करते? OH minus on the other side. So if I have to add on the left side, I'll add 14H plus. If I have to add on the right side, I'll add 14OH minus. देखो इसको 10 पे ले जाएगा. So these are the two options we can follow. In this case, it was acidic medium. That's why I've added 14H plus on the left side. Why I've added on the left side? Because left side was having less charge. And 14H plus will increase its charge and it will equal to the charge on the right side. इतना हो गया. Now charge is balanced. Now hydrogen के लिए क्या बताया मैंने? I have to add H2O है ना? How many H2O on the right side I need to add? 7. 7. देखो तो जादू हुआ क्या? हाँ, हो गया? Oxygen is balanced now. So 7. that's how you balance any reaction. I'll give you some of the variations है ना? कुछ practice करेंगे अपन. लेकिन जो 4 step मैंने बोला ना, if you are fitting it into mind, देखो मैं इसी को जो लोग बोलते हैं ना my method, which is not my method, I'll just show you कैसे करते हैं इसको एक बार में. I'll just show you कि एक बार में अगर मैंने जो काम किया ना, वो सारा काम एक साथ अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँगा. सबसे पहले I'll assign the oxidation state so that we can have idea कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है. So just I'm assigning the required one only. +32 +4. Now if you check, if I say oxidation किधर हुआ है, so this is oxidation. I'll just write it like this.
So this is oxidation in which it is going from +3 to +4. But I told you पहले क्या करना था, ये atom balance करना था ना. So that's why I'm putting 2 here so that carbon is balanced. That's one part. Now Mn is already balanced, and if you see this is reduction. So reduction ko I'll show it like this one. So reduction is from here to here. Now Mn is already balanced, carbon is balanced after writing 2 here. If you see the total change per atom is 1 and there are 2 atoms, so total change is 2. Is it okay? ये तो किया था. यहाँ पर per atom change is of 5 and there is just 1 atom, so it is 5. Now whatever is coming here उसको इधर लिख दो. So I'll write that black में चलो I'll put some blue. So I was writing 2 here. Yeah. So I had already written 2 here. Now ये जो 5 आया ना इसको इस एंड पे मल्टीप्लाई करो और यहाँ जो 2 आया है उसको इस एंड पे मल्टीप्लाई. Okay. Now you see functional atom is already balanced. Mn balance, carbon balance, you balance the K. K balance करने के लिए we need to put just one K2SO4 and then after that S balance करने के लिए we need to put 3 this one, and then in order to balance the hydrogen there are 16 hydrogen, so we are putting here 8 and then we are claiming that everything is balanced. ठीक है. So I didn't understood कि 2 and 5 को कैसे multiply किया. Okay, just see this third step. In this case देखो ना 2 इलेक्ट्रॉन जहां आ रहा था तो we are multiplying it by 5 जहां 5 आ रहा था we are multiplying it by 2 है ना. Yes sir. Now we are doing the same thing. We have to equate the electrons है ना. Yeah. In this case we were getting 2 electrons, in this case we were getting 5 electrons. We need Yes. to equate it है ना. So in order to equate it, whatever number here we are getting ना, I'll write that at the end of these things मतलब I am multiplying this half reaction by 5. ठीक है. Yeah. But in this reaction, if you see total change was of 2, and that's why I need to multiply this half reaction by 2, and that's why I've written 2 and 2. Is it okay? Yes sir. 2 and 2. And that's why, so वो हो गया. And then third, last step was balancing all the remaining atom and hydrogen. So I balanced K by writing K2SO4, 1 K2SO4, and then I have checked right side where we have 3 sulfur, so I have written 3 here, and then I am balancing hydrogen, so 10 plus 6, 16, so I am putting 8 here. Yes sir. That gives you एक step में देखो मैंने अब इसको मैं कहने को एक step बोल रहा हूँ, but I was already having that step 1, 2, 3, 4 क्या क्या किया है ना. तो ये it will come by practice. Okay. So क्या करने का है, फॉलो द स्टेप्स जब तक पूरा माइंड में फिट ना हो जाए, बट एक बार प्रैक्टिस कर लेने का बाद में आफ्टर डूइंग दैट स्टेप्स फॉलो करने के बाद ना एक बार प्रैक्टिस कर लेने का है कि वेदर यू आर एबल टू डू इट इन वन स्टेप और नॉट. ठीक है. तो थोड़े प्रैक्टिस में लाओगे तो यू विल बी आल्सो एबल टू. तो 4 स्टेप्स है, एक्चुअली 4 स्टेप्स है, एंड देन उसी को मैंने 1 स्टेप में बना के लिख दिया एक बार में. इज इट ओके? यहाँ 2 था, 2 में 10. हाँ. Okay. Now I'll give you some questions. जरा practice कर लो. You balance this. आप बस स्टेप्स दिखा सकते हो स्क्रीनशॉट ले. Okay. I'll just write it at one place so that. Let me see. ठीक एक है. बार मैं पूरा लिख देता हूँ मैं, so that you can have that.
उसके बाद क्वेश्चन लिखूंगा। ओके, पहले फर्स्ट 3 स्टेप्स का ले स्क्रीनशॉट। हो गया। दिस इज द फोर्थ स्टेप। यस सर, हो गया। Okay, now try this. I've given you the reaction. Balance this reaction. And if you're not able to recall any step, just ask me. मैं बार बार बोलूंगा, तुमको याद। पहला step, identify the oxidation states of all the functional atoms on both the sides. दूसरा steps, write the half reaction, balance the functional atom. That was the second step. Third step was, अभी तो सामने दिख रहा है, allot appropriate number of electrons before adding them. Multiply the each half reaction with appropriate number so that electrons are balanced. Fourth step, other than H and O, balance all the atoms by writing the appropriate number of molecules on the required side, and then balance H by adding H2. ये चार है। Okay, Tusha has done it. Tusha, you're right. आगे बढ़ते जाओ। एंड इसमें तो इनफैक्ट जीरो मतलब क्या बोला तूने युषा? वो 1 लिखते हैं ना नॉर्मली, तो वैसे वन 0। कुछ नहीं लिखो, दैट्स ओके। ठीक है। ठीक है, चलो जिनका हो गया, आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन। सर, आई सेंट द आंसर ऑन व्हाट्सएप। ओके, चलेगा चलेगा। व्हाट्सएप क्या इतना रेफर करवाओगे? राइट।
जिनका हो गया, आई एम गिविंग यू अदर क्वेश्चंस, जस्ट ट्राई टू बैलेंस दिस. यूसा जीरो कैसे हो सकता है? उसको वन लिख, कुछ नहीं लिखता सर तो वन होता है. डोंट ये राइट ठीक जीरो. है, ठीक है जीरो सर, मतलब है ही नहीं. हाँ सोनिया, ठीक है योर आंसर इज राइट. जिनका आ जा रहा है आगे बढ़ जाओ. जिनको प्रॉब्लम आ रही है जस्ट आस्क मी. इफ एनी स्टेप यू आर नॉट क्लियर ना, अच्छा आगे क्या था, क्यों था, जस्ट आस्क. राघव, प्रेशा हो रहा है? हाँ सर, ट्राई कर रहा हूँ. प्रेशा, सर लास्ट स्टेप तक तो पहुंच गई बट ओ बैलेंस नहीं हो रहा. कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है इसका मतलब, जस्ट चेक द मिस्टेक, है ना. यस सर. सी द पॉइंट ऑफ मिस्टेक. नंदिता, यू देयर? यस सर, आई एम हियर. हो रहा है? हो रहा है सर, ऑलमोस्ट हो रहा है. ओके. कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक. ओके, आई जस्ट शो यू द स्टेप्स. लास्ट के दो स्टेप तो दिख रहे तुमको स्क्रीन पे ना. बाकी लोग जिनका हो चुका है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चंस. सर, डबल डिजिट में आंसर चलेगा? आ डबल, सकता है तो आएगा ना, नॉट अ प्रॉब्लम. पॉसिबिलिटी है तो क्यों नहीं आएगा. ठीक है सर, वो डबल डिजिट बहुत अजीब लगता है, हम लोग अब तक सिंगल डिजिट ही देखे हैं. तो आर्ट्स का स्टूडेंट है, अजीब लग रहा है. ठीक है सर. इमोशन पे नहीं जाने का. लाइफ के डिसीजन नंबर से लिए जाते हैं. क्या की थी, योर आंसर इज राइट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. प्रिशा, मिला क्या मिस्टेक? नहीं सर. सेंड मी द पिक्चर ऑन माय व्हाट्सएप. या. व्हाटएवर यू हैव डन ना, सेंड मी. बाकी किसी का? नंदिता, हाँ सर. आया? नहीं सर, सर आप कर सकते हैं, मेरा नहीं हो रहा. सेंड मी ना, व्हाटएवर यू हैव डन. सेंड मी योर वर्किंग, है ना. ये करना तो तुमको ही पड़ेगा लास्ट में. यू हैव टू डू इट ना. हाँ सर, लेकिन सेंड मी योर वर्किंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग ना, सो दैट आई कैन गेट द आइडिया कि क्या चल रहा है. ऑक्सीडेशन स्टेट्स आइडेंटिफाई किया? नंदिता, हैव यू गॉट द फंक्शनल एटम्स? अगर वही नहीं किया तो फिर पुरानी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सर ज्यादा नहीं हुआ. आई एम जस्ट आस्किंग वन सिंपल क्वेश्चन. हैव यू आइडेंटिफाइड द फंक्शनल एटम्स विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स? सर नॉट ऑल ऑफ दम. तो फिर तो आगे नहीं बढ़ेगा ना मामला. हाँ सर. सी लाइक NaOCl में Na का कितना लेते हैं? वी ऑलवेज टेक +1, है ना. हाँ सर, +1 फॉर Na, -1 फॉर Cl. हाँ. +1 फॉर Na. हाँ, not -1 for Cl. O is more electronegative. O is more. O in this case will be -2. This will be +1. So if you calculate Cl, it will be coming +1. हाँ सर. And earlier also I told you OCl minus का Cl is +1 हाँ. because this will be -2. ठीक है. Okay. Prisha has identified the right The mistake oxidation समझ गया. states. समझ गया. Okay. Let me see. Prisha का क्या step जा रहा है. Now 3, 5. प्रिशा, तुम्हारा वो जो OHR में यू हैव रिटन द इलेक्ट्रॉन्स ना, दैट इज रॉन्ग.
per atom per bismuth change is of 2 है ना, Yeah. but you have 2 bismuth ना, Yeah. that's why the total change will be 4. Cl के लिए it is right, okay, Yeah. but bismuth के लिए it will be 4. So Not sorry, could you scroll down for 1 second? हाँ जी, which one? Remaining Yeah. yeah, take the screenshot. Okay, Trusha, your second answer is also right. Good. बाकी किसी ने भेजा है क्या? Anyone else? Yes, sir, I think. Where? WhatsApp. Okay. Yeah, right. Good. लास्ट का नहीं लिखा है तूने यूशा, एक रह गया तेरा. अरे सर वो गलती ओके, चलो बाकी लोग जिनका इफ यू आर स्टक एट द सर एक फर्स्ट. मिनट दो, एक ओके, मिनट. फर्स्ट का ही बोल रहे राघव. हाँ वही. ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. टेक योर टाइम, बट कहीं अटक रहे हो, बिल्कुल नहीं आइडिया लग रहा है तो जस्ट से इट, है ना. फॉर नंदिता आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. ऑक्सीजन इफ यू टेक -2 ना, इट विल बी कमिंग +3. हाँ सर वो हाँ सर. This is having +1 -2 +1. This is having +1 -1. So if you see Cl is going from +1 to -1. Bismuth if you calculate +5 आएगा ना. हाँ This सर. much you have identified ना. Yes sir. Okay, now you write the half reactions. OHR, जब तक confidence नहीं है, will follow all the steps in separate steps itself. तो oxidation means +3 से +5 जाना is oxidation, है ना. And that's why we need to write Bi2O3 giving NaBiO3. Now if you see Bi is not balanced, so we'll put 2 here, है ना. That was the first step. Now in this case I'm writing NaOCl is giving me NaCl. Cl is already balanced. Now in the second step itself we were allotting the electrons. So it is going from +3 to +5. What is the total change in oxidation state? Sir +2. That is per bismuth. Yes. Per Sir. bismuth atom change is of 2. How many bismuth atoms we are having? Sir 2. 2. So total change will be +4. 4, है ना. So that's why we'll writing +4. That was the mistake of Prisha, है ना. Prisha अभी हुआ क्या, आगे बढ़ा क्या? Yes sir. Okay. 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 Now यहाँ पे this was +1 to -1. What is the change? Sir -2. हाँ, तो उसको माइनस के साथ नहीं बोलते, टोटल चेंज इज 2, है ना. Yeah. So we'll be writing 2 electrons on the left side. Per atom there was change of 2 and there is just 1 Cl atom, है ना. हाँ sir. Now I need to add it. Before adding it, we need to ensure that the electrons should be equal. So that's why into 1 and into 2 we need to put it. Yes So that sir. electron will become equal. Now if you add it now, this will give you Bi2O3 plus 2 NaOCl, and that right side you will get 2 NaBiO3. Sorry, 2 NaBiO3 plus 2 NaCl, है ना. Yes sir. I'll check bismuth again. I'm telling you this thing. एक reaction आएगा जिसमें अगर ये काम नहीं किया तो गड़बड़ होगा. So I'll check the bismuth again whether it is balanced or not. Is it balanced, bismuth, in the added reaction? Yes sir, is balanced. And what about Cl? Cl is also balanced. Sir. Also balanced. Then we'll see all the other atoms other than H and O. What is that other atom? That is sodium, है ना. Yes sir. Is sodium balanced? Yes sir, it's balanced. No sir, it's not balanced. Not balanced, huh? How many Na and which side it is deficient in?
It's deficient on the left side, sir. Left side. So we need to have 2 more sodium somehow, है ना? Yes, sir. For that, they have given us NaOH. So we'll add how many NaOH? 2 NaOH. 2 NaOH. And that's how we have balanced sodium. Now we'll balance hydrogen. How many hydrogen on the left side? So 2. And how many on the right side? 0. 0. So there is deficiency of 2 hydrogen atoms on the right side. So how many H2O I should add so that 2 का deficiency will be 1. 1. अभी देखो जादू हुआ क्या? Oxygen is balanced or not? हाँ, sir. 3 to 5 to 7 है ना? यहाँ पे 6 plus 1 7. It is balanced. Clear ना? Yes, sir. Clear. Okay. Next you try. सर हाँ जी. ट्रेडिशनल मेथड से आसानी से आ रहा है तो वो यूज करें. हाँ अगर देख के हो जा रहा है तो आई डोंट माइंड कि तुम स्टेप्स क्यों नहीं फॉलो कर, बट इट शुड नॉट बी रिस्की. ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड से करने में आई एम स्पेंडिंग 5 मिनट्स, है ना? दैट वी शुड नॉट. नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्टेप वाला मेथड ज्यादा टाइम लेगा इसके. अगेन आई एम टेलिंग, स्टेप वाला मेथड इज टाइम टेकिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली यस, बट अगर दूसरा मेथड काम ही नहीं करेगा, फिर मान लो मैंने 5 मिनट्स दिया, मेरे से बैलेंस ही नहीं हुआ, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना. सो बेटर तरीका क्या है ना, ये जो मेथड है ना, स्टेप वाइज जो मेथड है, इसको कम समय में करना सीख लो, सो दैट वी कैन गेट अ गारंटी कि डेफिनेटली हो तो रहा है. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट ना? हाँ सर. आई एम सेइंग कि इफ यू आर, जैसे मैंने देखो ना स्टार्ट में जो किया था I2 plus Na2H2O3, उसके लिए why to follow the step if it is visible directly within 15 सेकेंड I have balanced it, है ना? तो फिर Yes, वहां sir. नहीं करने का है. बट अगर कहीं लग रहा हो कि नहीं, मैंने 5 सेकेंड दिया और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं हो रहा है, देन आई विल स्टार्ट फॉलोइंग द स्टेप्स, है ना? ठीक है सर. हाँ जी. So I sent my working on WhatsApp. Can you check? Okay, I'll check it. Which question you are saying? Second one. I'm not getting the answer. Okay, I'll check the mistake. So, एक एक करके पहले सोनिया का देखने दो. You have not balanced, Sonia, you have not balanced chromium in RHR. Yeah, okay. Okay, check that. हाँ, Raghav, you were saying something? सर तो ये जो मल्टीप्लाई किया आपने into 2 ब्लू में, that was to balance the electrons. हाँ. फिर उसके बाद ऐड कर दिया. ऐड हाँ. करने के बाद अदर देन H and O सबको बैलेंस करेंगे बाय एडिंग सम अप्रोप्रिएट रिएजेंट व्हिच इज अवेलेबल इन द रिएक्शन. लाइक इफ यू से, जैसे पहले ऐड करने के बाद देयर वाज नो NaOH एंड देयर वाज नो H2. ठीक है, दीज आर द 4 थिंग्स व्हिच वर प्रेजेंट, है ना? ऐड करने के बाद उसमें चेक किया ना, तो आई एम हैविंग 4 सोडियम ऑन द राइट साइड, आई एम हैविंग जस्ट 2 सोडियम ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, दैट्स व्हाई I have added 2 NaOH on the left side so that sodium is balanced. Is it okay? हाँ. Now, once I have got the sodium balanced, bismuth balanced, chlorine balanced, I'll start checking balancing of hydrogen. So after adding 2 NaOH, I have got 2 hydrogen atoms on the left side, but there was no hydrogen atom on the right side. And that's why I've added 1 H2O to balance the hydrogen. And now I've got oxygen balanced automatically. Is it okay? हाँ सर, ये NaOH जो था that was there originally, we added that and then वो 2 NaOH किया to balance the overall NaOH, right? Yeah, sodium, to balance the sodium. हाँ, sodium, yeah. Yeah. Okay, so. ओके हर्ष, लास्ट वाले में यू कैन टेक कोफिशिएंट एलिमिनेट भी कर सकते हो ना, 2 से डिवाइड करके. हर्ष, यस सर, सॉरी. हाँ, यस सर. है ना? सॉरी, यू डोंट हैव टू से सॉरी, दैट इज आल्सो बैलेंस्ड रिएक्शन, बट यू कैन सी द ऑप्शन. अगर ऑप्शन ऐसा नहीं मिला तो 3 वगैरह वाला जो मिलेगा ना, यू कैन डू दैट आल्सो, बट उसमें एक खतरा है. आई विल टेल यू क्या. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू हैव गॉट? टोटल 10 electrons. 10 na? 10 was for your way of balancing. Yeah. When you are dividing the reaction by some number na, like by 2, then you should divide the electron also by 2. Always remember that. Okay. So if you divide the whole reaction by 2 na, then right side में उसके bracket में 5 electron लिखना, 10 मत. Yes sir. Because that will
do some mistake in future. मैं बताऊंगा आगे कहाँ पे काम आएगा, तो वहाँ mistake. Okay, anyone else having some problem in any question? Frusha, you have given me that copper wala, na? Copper wala. Yes, you're right, Frusha. That's also right. Yusha, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? I'll just give it number so that we can talk clearly. Yusha, सर कौन से क्वेश्चन पे? फोर्थ पे? सर सारा भेज दे, एक और भेजू? अच्छा, सब हो गया क्या? किधर भेजा? हाँ सर, भेजा आपको चैट पे। 1 minute, let me see. Yes. 10 to 6, yes. Then yeah, everything is right. Good. Trusha, अभी तुमने जो भेजा that is for BR2 वाला ना? Yes. Yeah, 3, 6, 1, 3. Again, you have divided the complete thing by 2, है ना? End में. Yeah. So you need to take care that. Then 10 electron नहीं बोलने का है. With your way of balancing ना final, it should have 5 electron का exchange. Yeah. Okay. चलो तो यूषा का हो गया. सोनिया, क्रिश, Prisha, at which question you are Sir, doing? हाँ जी, Prisha. the third one may I'm not able to find out the functional atom. Functional atom. Okay, let's see. Copper in neutral form is having 0 oxidation state, Yeah. and copper nitrate का nitrate is having overall charge -1. So 2 nitrate will have -2 charge. Yeah. So copper will have +2 charge. Now Yeah. if you see nitrogen of this one, this will be coming +5. And here NO में N is having +2 oxidation state because oxygen is -2, है ना? Yeah. So copper is the functional atom and nitrogen is the functional atom. Okay. Okay, Nandita, which question? Second, sir, sir, I'm doing the like equations. I'm doing Okay, the चलेगा. This is IO3 minus है ना, ये छोटा सा दिख रहा है. हाँ सर, वो देखिए दिख रहा है। Geet, So I'm Geet on and the fourth one. fourth one. Okay, Sonia. तो सेकंड वाला नहीं आ रहा था, सो आई वेंट ऑन टू थर्ड. Okay, चलेगा, लेकिन सेकंड वाले में मिस्टेक तो बताया ना मैंने. या बट देन उसके बाद भी मेरा ये भी आई नहीं हो इज रहा. नॉट गेटिंग बैलेंस. Okay, let's see that. Okay, I'll solve the second one. Enough time given for second one. So we have I2 plus Cr2O7 2 minus plus H plus giving IO3 minus plus Cr3 plus H2O. Now, if I write oxidation states देख लेते हैं 0 to +5 +6 to +3, and that's why OHR will be I2 giving IO3 minus. If I don't put 2 here, iodine will not be balanced, so I'll put 2 here to balance the iodine. चेक करते जाओगे, जो जहां पे स्टक है चेक करते जाओगे. सेकेंड स्टेप है Cr2O7 2 minus, और जैसे मिस्टेक पता चले बताओ, so that we don't do it in future, है ना. So now chromium को बैलेंस करने के लिए we need to put 2 here. Now we need to see total change in oxidation state 0 to +5, 5 का change per iodine. We have 2 iodines, so that's why total change will be 10. यहाँ पे chromium से is going from +6 to +3, +6 to +3. 3 का change per chromium, we have 2 chromium, so that's why total changes will be of 6. Now we can multiply them. या तो 6 and 10 से multiply कर दो, or even if I'm multiplying it by 3 and 5 ना, even then it is balanced, है ना? Is it okay? अभी तक कुछ नहीं मिला? Sir, I sent you my last one. Yeah, I'll check that.
Okay. Basically, if I add these reactions, what I'm getting 3I2 plus 5Cr2O7 minus giving 6IO3 minus plus 10Cr3 plus. Now this is ionic in nature, so I need to balance the charge. What is the total charge on the left side? minus -2. Minus 2. नहीं, 5 minus ions 10. left. Minus 10. Minus 10. And what is the total charge on the right side? 20 plus 24. Plus 24, because this is giving you 30 and this is giving you minus 6. So plus 24. What is the gap? 34. 34 ka, not don't write 14. Was that the mistake, Sonia? Gap 14 ka liya kya? नहीं मैं I forgot to balance I like Okay, two. that also you have to do, hai na? So यहाँ पे there is a gap of 34, and if it is in acidic medium, I'll write 34H plus on the left side, and to balance the hydrogen, I'll write 17H2 on the right side, and I claim that oxygen is balanced, which you can check. है ना? So Is it can okay? you explain the 34H plus part again, please? Okay, the left side charge before adding H plus was minus 10, 5 ions with minus 2 charge each. So total charge was minus 10, है ना? Yes, sir. And right side में we have minus 6 plus 30, that is plus 24 total charge. Yes, sir. Minus 10 to plus 24. The gap is of 34, है ना? Yes, Not, sir. not 14. This is the gap of 34. So Huh. in order to manage that charge, we need to add 34H plus on the left side. Yes, sir. Okay. And then charge is balanced. Now we need to balance hydrogen. There are 34 hydrogen on the left side. So to balance that, we need to add 17H2 on the right side. Okay, sir. Got it. And then oxygen is balanced. Yes, sir. Okay. Third one. So I had sent you my answer. You have got the right answer. Prisha, you have sent me on WhatsApp. WhatsApp. Okay, let me check. Okay, her side also send me. So you have divided it. No, it is balanced. Yes, good. Prisha ka, let me check. That's okay. Second step is okay. Then you have multiplied. 3, 3, 6, 6. Yes, 2, 2. Yes, yes. Added. Now, in the last step, just tell me, is nitrogen balanced? Prisha? No. Nahi na? No. No, this was the case I told you. Always check for all the atoms other than H and D. That includes functional atom also. So if you see left side mein we have 2 nitrogen, right side mein we have got 8 nitrogen, hai na? How many? 3, 2, 6, 2, 8, है ना? तो for balancing nitrogen, अच्छा ये क्यों हुआ? अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा था कि functional atom भी balance नहीं है. Why it is happening? Because nitrate का nitrogen was also going in the copper nitrate, which you have not balanced, na? That's why we need to add 6 more HNO3 on the left side so that the nitrogen of copper nitrate is also balanced, hai na? Yeah. Then you get the right answer. Okay. So I'll give you the method, third one. For third one, we have copper plus HNO3, copper nitrate plus NO plus H2. चलो एक स्टेप में करते हैं. 0, 2 plus 2, 2 का चेंज, कॉपर ऑलरेडी बैलेंस्ड, प्लस 5 to plus 2, 3 का चेंज, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, 3 का चेंज जहां है वहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड जहां 2 का चेंज है वहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, and then we have added it. After adding, we have got 6 nitrogen, and that's why we need to add 6 HNO3 to balance nitrogen. Copper is already balanced. Other than that, we have got 8 hydrogen on the left side, so we need to add 4 H2O on the right side. And then if you check,
8 3 are 24 and यहाँ पे 18 plus 2 plus 4. It is balanced. So we will say the balanced reaction is, anyone having any doubt, just ask me. But 2 plus 6. क्योंकि 2 देखो ना, 2 वाला नाइट्रोजन तो ये नाइट्रोजन से बैलेंस हुआ था ना, ये नाइट्रोजन तो बैलेंस ही नहीं किया. कौन सा? हाँ. That's why we have 6 extra nitrogen ना. Yes sir. उसके लिए we need to add 6 HNO3. This was a special case. जिसमें functional atom even after adding the half reactions is not balanced actually. हाँ इधर ही. Okay. And then 3 CuNO3 twice plus 2NO plus 4H2. This is the balanced reaction. If you see the fourth reaction, that is again a special reaction. It is called a disproportionation reaction. If you see fourth one, okay, your answer is right, Geet. You have also done the right thing. Okay, good. Okay, let's see. Fourth one. Why I'm calling it a special reaction? Because if you see now, which is getting oxidized in this case? What substance is getting oxidized in this reaction? Bromine. Bromine. And what is getting reduced? Also bromine. That is also bromine. That type of reaction is called a disproportionation reaction, when the same element is getting oxidized as well as reduced simultaneously in a redox reaction. That is called a disproportionation reaction. I'll just write the definition and then we'll see the balancing. And opposite to disproportionation is called comproportionation. तो जो पांचवा एग्जांपल है ना, that is an example of comproportionation reaction. I'll just write it and then we'll start solving it. So disproportionation implies that the functional atom of the same element present in a given substance is simultaneously oxidized as well as reduced. So if you see Br2 ka Br is going from 0 to -1 also, and it is going to +5 also. So 0 to -1 is reduction and 0 to +5 is oxidation. The same element is undergoing reduction as well as oxidation. So that's why it is called disproportionation. Again, if you see this one, यहाँ पे Mn is +6, it is going to +7 as well as +4. So 6 से 7 जाना is oxidation, 6 से 4 जाना is reduction. And that's why this is called disproportionation. Opposite to that is called comproportionation. ध्यान से देखो क्या लिखा है. If it is a chemical reaction where two reactants containing the same element but with different oxidation numbers form a compound with an intermediate oxidation. I is -1, I is +5, and I is 0. Two different oxidation states, one is higher, one is lower, and they are forming a common intermediate. 0 is lying in between -1 and 5, somewhere in between, है ना? And that's why we are saying it is comproportionation or synproportionation, which is opposite to disproportionation. If I write the opposite reaction, देखो ना क्या हो रहा है. Opposite reaction is I minus plus IO3 minus plus H2. If you see this reaction, 0 से -1 and +5 जाना is disproportionation. अभी just सीखा है. And that's why opposite to that is called comproportionation. Is it okay? Now we'll see how to balance these reactions. So I'll just give you. So this one which you wrote in red, that is disproportionation. Which one? The one you wrote in red. Yeah, na? Ha. This is disproportion because it is reduced as well as oxidized, है ना? Yeah. यहाँ पे reduced, यहाँ पे oxidized. And that's why this reaction will be called, this is a disproportionation reaction. And उसी का उल्टा कर दिया तो that is called comproportionation reaction. Now let's see just how to balance it. And I have given you, I think मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं तुमको बैलेंस करने के लिए असाइनमेंट. I'll send it again. I'll forward it again so that you can have a complete list. जितने मुझे अच्छे रिएक्शंस दिखे जिसको बैलेंस करना थोड़ा टफ हो सकता है, कुछ इजी भी रहेंगे कुछ टफ भी रहेंगे, but I have given you that for practice. तो आज के आज कर लेना.
ठीक है, I'll just show you. In case of disproportionation reaction, as the same substance is getting oxidized as well as reduced, you have to write that substance in both the half reactions. Okay, that we need to take care. That is the only special part in this one. So OHR will be Br2 giving KBrO3, and in that we need to write 2 to balance bromine. RHR में again we will write Br2 and we will write KBr on the right side, and again we have to write 2 to balance the Br. Then if you check 0 से plus 5, 5 का change per Br, so there are total 2 Br, so that will be change of 10 electrons. 0 to minus 1, 1 का change per Br, we have 2 Br, so 2 electron. And in order to balance that, we need to multiply it by 5, we need to multiply it by 1 simply. And that's why if you add it now, adding it will take total Br, and that is coming 1 from the first one and 5 from the second one. So it is becoming 6 Br2 giving 10 KBr plus 2 KBrO3. This much? No, Br is balanced, K is not balanced. For that K, we have 12 K on the right side, so we need to write 12 KOH on the left side. Now K is balanced. To balance the hydrogen, we have 12 hydrogen on the left side, so we need to put 6 H2O so that hydrogen is balanced and oxygen will automatically be balanced. If you see, it is balanced. Now in this reaction, my point was, in this reaction we have written 10 electrons, or if you want to simplify it, we can also write 3 Br2 plus 6 KOH giving 5 KBr plus KBrO3 plus 3H2O. If you want to write this, I'll write here 5 electrons. So if you divide the reaction by some number, same number say, we need to divide the electrons also. Any doubt in this case? Anyone having any doubt? इसी का उल्टा है अगला वाला रिएक्शन, देखो ना, उसमें भी I minus IO3 minus है, जस्ट मीडियम अलग कर दिया है. दिस वाज बेसिक मीडियम, दैट फिफ्थ वन इज एसिडिक मीडियम, है ना. फिफ्थ में यही रिएक्शन था ना. हाँ, सो फिफ्थ में एसी की कहानी उल्टी कर दी है, बट इट वाज इन आयनिक नेचर है, तो वी नीड टू राइट दैट. सो इफ आई राइट OHR, it will be I minus giving I2. That's why we need to put 2 here. RHR में I'll write IO3 minus giving I2. तो यहाँ पर right side में we need to write I2 in both the half reactions. So now to allot the electron, I'll write 2 electron here. I'll write 10 electrons here. Before adding them, I need to multiply this by 5, and that's why I'm getting 10 I minus plus 2 IO3 minus, that is giving me 6 I2. And after that, if you see, charge balance करने के लिए I need to put, if I am having H plus, I'll be writing it on the left side, and that has to be 12 H plus, so that the total charge on the left side also becomes 0, and then only charge will be balanced. To balance hydrogen, we need to put 6 H2O here. That is the balanced reaction. Is it okay? Any doubt? So in fact, I started preparing that assignment ना, तो मैं A से चला, मैं चला गया Z तक, और Z के बाद मैं छोड़ दिया कि ठीक है, अब अल्फा बीटा करने का कोई पॉइंट नहीं है. So I have given you 26 reactions. Out of that already 5-6 तो अपन ने कर लिया यहाँ पे, but बाकी सारे reactions कर जाओगे. If I'm seeing, let me see. Part 1. I'll just show you. तो पूरा असाइनमेंट इनफैक्ट कर जाने का भी, I'll forward that assignment to you again, क्योंकि प्रीशा वगैरह के पास नहीं होगा. तो देखो, ये A से Z तक मैंने लिख दिया है. Do it within 24 hours, and if you are getting any difficulty, just share it. ठीक है. Now, if I am having, just to give you the idea कि whatever we are going to cover in the volumetric next lecture,
If I balance the reaction, then if I ask you some question from a stoichiometry, you can solve it after balancing the reaction. Because the stoichiometry ka first step itself, write the reaction, balance it, and then apply the relation of the moles consumed and moles produced. But if I tell you, अगर balancing में इतना time जा रहा है, तो फिर stoichiometry में तो थोड़ा और बढ़ जाएगा time. And that's why we'll be talking about some method which will give you a shortcut, and you'll be able to solve the question related to stoichiometry of these reactions in most of the cases without balancing the reaction. And that method is called method of chemical equivalence that we are going to cover in the next और lecture. आप हाँ ठीक है? Anyone else having any doubt? चलो ठीक है, फिर इसको क्लोज करते हैं. I'll share the this notes as well as the video as well as the assignment. ठीक है? हाँ हर्ष. सर मेरे को होमवर्क के असाइनमेंट में थोड़े डाउट्स हैं. या बोलो. यस सर. वो जो आपने क्वेश्चन 5 बोला था ना करने को, मेरे को उसमें हाँ, थोड़े हाँ. डाउट्स हैं. ओके बोलो. सर मेरे को क्वेश्चन 1 और 2 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में नहीं आ रहा था. same. It क्योंकि looks like it was the same. because those reactions are not redox reactions, and if the reaction itself is not redox, then concept of oxidizing agent and reducing agent is not valid. So we'll say concept is not applicable. Okay, I'll just give ओके you the सर. answers of those questions. सर So if also you see सर the first डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए कैसे काम करता है? disproportionation, we will say Br2 is oxidizing agent as well as reducing. Okay, so if you see na, यहाँ पे Br2 के लिए I have written that it is oxidizing agent as well as reducing agent. If you see the first two reactions, these are non-redox reactions. And non-redox reaction, जब redox reaction होता है तो हम लोग बात करते हैं ना which one is oxidizing or reducing. So the point was not every reaction is redox reaction. So not in every reaction we can talk about oxidizing or reducing. Okay, ठीक है, फिर क्लोज करते हैं. I'll share this assignment. हाँ जी बोलो. सर आपने मुझे जो नोट भेजे थे फर्स्ट क्लास के, हाँ उसमें 2-3 डाउट्स थे, तो अभी बोलो कर ना, तुम रुक जाओ, बाकी सब अगर लीव करना चाहते हो तो लीव कर सकते हैं. You ask me. I'll तो just आप वो डॉक्यूमेंट yeah खोल सकते हैं. yeah I'll open that. I think on this only we'll see. Yeah, first one or second one you're asking? फर्स्ट. Okay, not really. Which part? सर इन दिस रियल और इमेजिनरी चार्ज नहीं समझती. Yeah. See, if I'm having NaCl, NaCl is an ionic compound, है ना? या So you have Na plus and Cl minus. So that you can see that Na is having +1 charge. So we are saying that oxidation state of Na in NaCl is +1, which is a real charge. या But in H2O, H2O is not ionic, it is covalent, है ना? या So when I'm saying O is having net -2 oxidation state, it is not the real -2 charge, है ना? In polar covalent bonds, we are saying this is imaginary charge over that. In ionic compounds, the ion which is having the charge, that is the real charge, which is called oxidation state. Is it okay? या आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में F is greater than O में you have highlighted ऊपर Yeah, tell me. first page only. First page. First page. Yeah. Okay. Tell me which part. In second part. Second part, you have written electronegativity. Okay, F second. is greater than O. Yeah. No, sir. First document only. First PDF you are saying? उसमें second point is there. Okay. And उसमें you have written third point के just ऊपर. Okay. हाँ. This one you are saying? No, sir. हाँ. First page का third point This के one? Okay, tell me the point now. I'll just find out. It was about electronegativity. You were telling about H2SO4 का example. So in that you have highlighted O. So is it about any exception or you just No. did I it was for just it? talking about if I'm having O bonded with any atom, no, other than F, then it will always get a negative oxidation state because it is more electronegative than all the other elements, no? So whether it's bonded with sulfur, nitrogen, chlorine, carbon, hydrogen, in any case, O will take the negative oxidation state.
Only if it is bonded with F, then O will take the positive, F will take the negative. Okay, that was the point. Okay. Yeah. And sir, Hmm. one second. Tell me. In the fourth one, for a heteroatomic compounds or compound ions, Okay. इसमें E part oxidation state of H is +1. Okay. This one. That I didn't understand. Okay. What I told you, H can be bonded with metal, H can be bonded with non-metal. Hai na? Yeah. If it is bonded with non-metal, then we are saying that H will be in +1, like in HCl. Yeah. We'll say Cl will be -1, H will be +1. Yeah. Okay. But if I am having NaH, then H will be -1, Na will be +1. That was Okay. okay. And in the F part, oxidation state of each O in O2 PTF6. Okay, so in that case, we are supposed to know इसका एक historical significance मैंने बताया था इनको. This is the compound which inspired the preparation of first compound from inert element. Like we have the first inert element का compound was XCPTF6. And this is mentioned in NCERT के 12th. Okay, so in that Xc is actually +1. So basically it was inspired from O2 PTF6. We are supposed to know that in O2 PTF6 we have O2 plus and PTF6 minus. ठीक है? Okay. Once we know that, if 2, so कैसे करेंगे अभी 2 into X is equal to 1 +1. for Yeah. this part. And that's Yeah. why we'll write X is +half. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. So, Yeah. on Thursday, I won't be able to attend offline. So then can Raghav set up the tripod thing so I can come online? तो तू राघव को बोलेगी. हाँ, Raghav. डील कर ले. राघव is there. I think he's there. Awesome. हाँ. Anyone else also wants to join, they can join. राघव को ट्रीट दे तू. Sir, I give him notes, बस हो गया. Our Okay. McDonald's. ठीक है. प्रिशा, any other doubt? तो हो गया डील है ना? Yeah. Yeah, प्रिशा. No, sir. No, sir. No. Any other doubt? No, sir. Okay, चलो फिर ठीक है, क्लोज करते हैं ना. सर या हर्ष. सर जैसा आप मुझे वो केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट भेज रहे हैं, वैसे केमिकल बॉन्डिंग के भी उस टाइप के नोट भेज सकते हो प्लीज. केमिकल बॉन्डिंग मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेरे बच्चे का लिखा हुआ नहीं है, एक पढ़ाए हुए बच्चे का. हाँ सर, वो बहुत लंबे नोट है लेकिन. हाँ, वो मेरे को देखना पड़ेगा. वो आई एम इन द प्रोसेस बट नॉट कंप्लीटेड. So मैं टाइम लो भेजूं? वाला. हाँ जी. Mine are राघव like, हाँ, राघव तेरा कितने पेज का नोट्स है? I guess 60 के आसपास, excluding the pages that you gave in physical class. एंड व्हाट आर दोस पेजेस? वो MOT and वो सब. अच्छा ठीक है, दैट आई विल सेंड हिम. तो उसको 60 वाला भेज दो एक बार, है ना? I don't have his number. Harsh, just you can message. हाँ, आई टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू. Yeah. ओके, चलो फिर ठीक है, क्लोज करें. ये So, हाँ राघव बोलो. हाँ यस, वो आपने बताया था ना सेकेंड लेक्चर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक में, वो ग्रुप्स का जो लेना चाहिए, वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? ग्रुप्स का ऑक्सीडेशन वैसे लेते हैं. Okay, let's see if it is there. Let's see. What was that? Which group you are saying? Like in that first question only, like you had said now, like when there are so many elements in one compound, to just like क्या बोलते हैं, like NO3 का -1 लेते हैं वैसे, like. Okay, ऐसा. See, if I have once calculated that nitrate में, like मान लो मैंने तुमको दे दिया PbNO3 twice, and if I am asking Pb कितना? +2. Now, how do you know? आपने बताया NO3 -1 होता है. NO3 as a whole is having -1 charge, है ना? हाँ. So even if I take the nitrogen कितना, oxygen कितना ना, net इसका -1 ही आएगा. हाँ. So what I'll do ना, I'll write इसका 1 into X plus 2 into -1 सीधा ले लेने का. पूरे नाइट्रेट को we'll treat it as a single species. ठीक है? Yes. And then we'll do the calculation. And then X will be +2. So are there like any list of
common ऐसे groups that we should अनायंस की लिस्ट मैंने लेक्चर 1 मोल कंसेप्ट के टाइम पे डिस्कस किया था, है ना? ठीक है, देखना पड़ेगा। नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेट, ऑक्सिलेट, है ना? ये पूरी हाँ लिस्ट देख जाओ, लेक्चर 1। इफ यू आस्क मी आई विल सेंड यू दैट लिस्ट अगेन, ठीक है सर। भेज दूंगा मैं तुमको। लाइक इफ आई एम हैविंग लाइक मान लो FeCN6 4-, ऐसा कुछ लिख दिया। नाउ Fe एज का अ होल आई नो दैट कि Cn इज हैविंग -1 चार्ज, है ना? हाँ What I'll write, 1 into x plus 6 into -1 is equal to -4, and that will give me x equals +2. ठीक है, हाँ हाँ ऐसे। yes. That was the point. Anything else? Sir, Yeah, I needed help in ionic also. So what should I चलेगा। do for that? What I'll do now, I'll start sharing the notes. Okay. Yeah. I'll start sharing the notes, go through it, and whatever doubts are there, na, indicate it, and we can have a session. है ना? Okay. Okay, not a Yeah. problem. You'll understand that. Okay, anything So, else? Adhav, Geet? Yeah. so actually मैं आज वो होम असाइनमेंट 2 ट्राई कर रहा था केमिकल Okay. इक्विलिब्रियम का। Chemical तो equilibrium. Okay. हाँ, तो उसमें एक्चुअली मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब नहीं, इज कुछ इट कुछ फाइन टू क्वेश्चंस यूज उठा के कैलकुलेटर? रखे गए हैं, तो यू कैन हैव सम, बट यू कैन सेंड मी द सैंपल व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर गेटिंग, है ना? जस्ट सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल सी टू हाँ, इट। ओके, ओके सर, चलेगा, ओके। आई विल सजेस्ट यू इफ इट इज, इफ देयर इज अ वे टू अवॉइड द डिफिकल्ट कैलकुलेशन, आई विल टेल यू। ठीक है, सर तो नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्या थोड़ा देर, मतलब हाँ आफ्टर चलेगा, क्लास? नॉट अ प्रॉब्लम, बट व्हाट आई माय पॉइंट इज ना, व्हेनेवर यू आर गेटिंग दिस टाइप हम्म, ऑफ डिफिकल्टी ना, इमीडिएटली शेयर इट विद। हो सकता है या मेरे या एक लाइन बोलने से यू गेट द आइडिया, है ना? तो करेक्ट फिर इतना करेक्ट, देर ओके वेट करने का सही है, पॉइंट नहीं रहेगा ना। इफ यू डोंट गेट द या आइडिया, तो डेफिनेटली, व्हेनेवर वी आर इंटरेक्टिंग, तो वी विल डिस्कस दैट, है ना? बट ओके कीप सर, ओके शेयरिंग योर ओके, डाउट, सो दैट इफ आई गिव यू द आइडिया और उससे काम चल गया, तो तुम आगे बढ़ जाओगे ना, अदरवाइज यू आर या स्टक एट दैट डेफिनेटली, पॉइंट, है ना? ओके, यस, ओके ओके, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? सो तो आइसोमेरिज्म का वो कर रहा हूँ, वॉट एवर यू हैड सेड होमवर्क करने के लिए वो सब कर लिया। बस वो थोड़े स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन वो छोड़ दिया है। स्टीरियो तो अभी करना ही नहीं है ना, मैंने हाँ पढ़ाया नहीं। वही, स्टीरियो नहीं कराया है, टोटोमेरिज्म नहीं पढ़ाया अभी, है ना? हाँ। तो वो तो करना सो पड़ा। वो कर रहा हूँ और वॉल्यूमेट्रिक, सो बट लाइक ये 3 ट्रैक जो चल रहे हैं ना, मतलब थोड़ा इसलिए तो टफ मैंने लग रहा है। आयनिक एक बार किया है कि आयनिक खत्म करके ना, देन विल वॉल्यूमेट्रिक और इसी को कंटिन्यू करेंगे आइसोमेरिज्म को, देन हाँ विल ट्राई टू हैव द 2 ट्रैक। ठीक है, So isomerism के भी notes भेजते रहना. हाँ मैं भेज दूंगा, चलेगा, जितना पढ़ा है अभी तक उतना भेज दूंगा, एंड देन थर्सडे को विल कंटिन्यू, है ना? Yeah. हाँ, तो वो तीनों ट्रैक को बैलेंस करने में मतलब मुश्किल डिफिकल्टी हो तो रहा है आएगी, आई नो क्योंकि दैट, बट यू हैव टू डू इट सम फॉर्म। आयोनिक तो मतलब मेरे को टफ ही लग रहा है, तो और आइसोमेरिज्म एंड वॉल्यूमेट्रिक इट्स स्लाइटली बेटर देन दैट, तो मतलब उसमें लग जाता हूँ और वो हो जाता है, फिर आयोनिक छूट ही जा रहा है। बट कहा जाता है ना, ऑलवेज किल द बिगेस्ट फ्रॉग फर्स्ट, हाँ है ना? तो यू somehow सी व्हाट यू हैव टू डू ना, यू गो स्टेप वाइज, लाइक आयनिक का कंसेप्ट पहले समझ लेना है। इफ यू गेट टाइम हाँ टू प्रैक्टिस फॉर दैट, डू दैट प्रैक्टिस। यस अदरवाइज फिर जब मौका मिलेगा ना, जैसे एक दिन मान लो हॉलीडे मिला, उस दिन टारगेट रखा कि 3 hours आई हैव टू गो थ्रू द आयनिक, है ना? हाँ ऐसा कुछ करो, एंड वी आर एट द एंड ऑफ आयनिक एग्जाम। ठीक है, राइट तो एक लेक्चर और लगेगा, एंड देन वी कैन फिनिश इट, है ना? उसके बाद फिर व्हेनेवर यू आर गेटिंग टाइम ना, तो उसके कंसेप्ट वाइज उसमें काम करने का, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर एक। राइट राइट जस्ट गो थ्रू कि आज ये 3 केस कर लेते हैं, आज ये 2 केस कर लेते हैं ना, ऐसा। ठीक है, हाँ सर। सर ठीक। एंड ये रिकॉर्डिंग्स मतलब जीओसी एंड वो जो भी ऑनलाइन क्लास है आपके, आप यूट्यूब पे अपलोड करोगे? पुराना वाला सब उड़ गया है, अब जो बैकअप मिलेगा तो मैं देख सकता हूँ, बट बाकी सब तो चला गया। हाँ अभी क्या कर रहा हूँ ना, मैं सब अब यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, वट एवर लेक्चर्स आते हैं ना, हाँ सर, वो तो मैं डाल रहा हूँ, पुराने वाले की गारंटी मैं नहीं दे हाँ हाँ, सकता। आई सी टू इट, बट मुझे नहीं लग रहा है कि वो पुराना वाला मिलेगा। जो भी है मतलब, हाँ ठीक है, चलेगा, जो भी रहेगा वो मैं डाल दूंगा। यस। ओके, बाय सर, थैंक यू सर। बाय।